Hi guys, my name is Abhimanyu Rajpurath. I'm a CLAT mentor at Pratham Test Prep. Till date, I've taught and mentored more than 8,000 law aspirants. And in our CLAT preparation strategy series, we are here today with the most important video, which is on do's and don'ts for CLAT 2020. If you are appearing for any law entrance exam in 2020, this video will be of immense help to all of you. Yes, so let's quickly start with the do's first. 5 things to do in order to crack CLAT 2020. Number one, as we all know, is to increase your reading speed. With a new pattern coming in, more questions based on comprehension, more emphasis laid on critical reasoning, it is imperative that you start studying, questions based on reading comprehension. Or that is, you have to increase your reading speed for that, obviously. Now, we all know that the number of questions are definitely decreased from 200, but one thing we are sure of is the questions now will be comprehension based questions. Yes, critical reasoning will be asked, which will definitely require, which will definitely consume time. If you read, whatever your current speed is, reading speed is, what you have to understand is you have to improve that, because it's just 2 hours, and in those 2 hours you have to attempt more questions than there are minutes for the exam. Yes, so there are more than 120 questions which will be asked in your CLAT exam, and you should be well prepared to read like a ninja. Yes, so to increase your reading speed, start reading editorials, newspaper. Subscribe to The Hindu, you can subscribe to Indian Express, and start reading newspapers and start reading editorials specifically. Now that will help you in 3 ways. Number one, it will definitely help you in your current affair preparation. Number two, it will definitely increase your reading speed, because if you make it a daily habit, there is no reason why your reading speed does not improve. Third point is the most important point, which will be that it will definitely be of great aid to help you improve your vocab as well. So whenever you find a word which you're not sure of, quickly Google it, quickly go through the dictionary and note down what is the true meaning of that word. This will help you in your vocab preparation as well. So it's a threefold benefit. If you start reading newspaper articles, it will definitely help you improve your reading speed. Moving on to the next point, which you have to do is identify your strong and weak areas. Now, how will you identify your strong and weak areas? Don't think if you are interested in studying a particular section or subject, you are strong at it. It does not pan out like that. What you have to understand is, when you are giving and attempting your mock tests, based on the number of marks that you're getting in a particular section, that ways you can identify what is your weak subject, what is your strong subject. If you are enjoying studying mathematics, quantitative ability, or let's say logical reasoning, you're very good at it, and you're scoring in every test, in every mock you're scoring 100% marks, then you can definitely say that yes, it is your strong subject. But on the other hand, if you love studying that, but your marks are just 50%, 60%, and you're scoring way more in verbal ability, then definitely you can make sure that you can understand that that is not your strong subject. But yes, what you have to understand here is that you have to quickly make your weak subjects turn out to be your strong subjects. That should be your aim, that should be your goal. So identify your weak and strong subjects through mock tests. Next is mock test analysis. Now I've throughout the 10 years of experience that I've had, and I can vouch on this, that not many students, once they appear their mock test, do not go through the mock test again, and especially that very day. Now that is most important. You have to analyze in which section you scored how much time did you take in each section. Let's say current affairs, how much time are you taking in current affairs? That is the most important question here. Yes, how much time are you taking in quantitative ability? How much time are you taking in verbal ability? Now you have to make sure that you are noting down the time, you're noting down the attempts, you're noting down how much marks are you getting, how many questions did you skip. You have to track down everything, and once you are done with the mock, once you've given the mock, you have to analyze it like a nerd. What you have to do is identify कितना time लगा कितने section में, कितने marks और बढ़ सकते थे, etc. All the mistakes that you committed in the mock,
you have to make sure that you take a note of it and make sure that you don't repeat that particular mistake again in the subsequent mocks. Next point is that you have to work on your time management. Now I know that this is one of the most important topic here of discussion, that time management. 99% of the students that I have met till date, everyone is facing one problem, which is how to manage time, how to manage attempting 5 subjects in the span of 2 hours. How do you attempt 200 questions? Now there's a good news, that there are not 200 questions, but there will be somewhere around 120 to 150 questions as per whatever news we've heard till date. So we can rest assured that the questions now, because they are comprehension based, it will require a great length of time for us to attempt those questions. So what should be your strategy? How should you manage time? We'll be creating a separate video, a detailed video on this, but to give you a quick guide here will be that to manage your time, you should track down your mock analysis becomes very important, and you should understand this, that when you are attempting a mock, the 2 hours that you will be spending there, in the first half your mind will be agile, it will be active, it will run like a ninja, it will work like a ninja. Whatever you have studied, you will remember everything, everything will go as planned. But the second half, which is the second hour of your exam, things might go downhill. Why? Because the mind starts getting fatigued. Yes, so if you have to manage your time, you have to identify your strong and weak subjects and then attempt your strong subjects in the first hour of your exam, and you have to practice this in the mock test. So if you think about it, every point that we discussed today, all these 4 do's are all interlinked. Yes, the next point is the most important point again after time management, which is selective study. Now you should be in a great space to understand what kind of questions come in your exam. What is the importance of a particular topic which you are studying? Yes, is it important with regards to your exam? Your aim is not to be a current affair maestro. Your aim is not that. What is your aim? Your aim is to crack the exam. Yes, so you have to just study topics, questions which are important with regards to your exam, and you are good to go. Yes, and how will you find out what is important for you? How will you select what to study and what not to study? You should go browse the previous year question papers of CLAT, IELTS, and even if you can find questions of NLSIU Bangalore and Nalsar Hyderabad 2001 to 2007, then it will be a great benefit to you. Why? Because you will get a great idea of what are the kind of questions that are asked in the previous year question papers, and you will find out that many questions, many patterns are all uniform throughout the 12 years of time since CLAT started. Many questions are repetitive, many questions, you will get a great idea of what to study. When you open a newspaper, you will get to know what to study, what not to study with regards to your exam, what is important, what is not. Yes, so selective study is really important. Only study topics which are there, which are important with regards to your exam. Say for example, if you are preparing for quantitative techniques, if you are practicing integration and differentiation and trigonometry, then only if you are preparing for these type of questions, what are you doing basically is ignoring all the information that is available for you for almost for free. Go to the previous year question papers, you'll find out there is not a single question asked on trigonometry or integration or differentiation, etc. Yes, so you should just study the concepts which are relevant with regards to your exam. जो चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, हमारा एम यहाँ पे क्या है? आर एम इज नॉट टू बी अ करंट अफेयर मास्टर, मैथमेटिक्स चैंपियन. नो, आर एम इज जस्ट टू क्रैक द एग्जाम. Yes, and for that we have to study selectively. Now let's move on to the don'ts. 5 don'ts for CLAT 2020. Number 1 is never ever ignore your verbal ability or English section. Now I've encountered this, again thousands of students have come to me and said कि सर इंग्लिश तो हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट्स पे मेरे को फोकस करना है, मेरे को करंट अफेयर्स पे फोकस करना है,
रीजनिंग पे फोकस करना है, बट वॉट यू शुड अंडरस्टैंड इज दैट यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन एनी सब्जेक्ट. Not just English, mathematics, deductive reasoning, logical reasoning. You cannot be, overconfident कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो भी it's okay. No, you have to study and prepare for every subject, and you have to practice every subject as much as possible, right? Otherwise, if you are too overconfident in one subject, anything can happen in your CLAT exam. Yes, paucity of time, difficulty of questions, etc. Anything can go against you. So you have to be well prepared to tackle anything that comes on your way when you're appearing for your exam. Yes. Second is fixation with your mock score. Now ये बहुत common है. अगर 200 marks का mock है तो many students will come and say कि सर 150 160 कैसे लाए, 170 कैसे लाए, अरे मेरे तो 70 है, मेरे 80 है, 80 से सर सीधा 150 कैसे पहुंचूं. So ये एक आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि if you are scoring somewhere in the region of 70s and 80s, it is not the end of the world for you. Yes. करना क्या है यहाँ पे, बेबी स्टेप्स लेने हैं. सो फिक्सेशन है, अगर आपको मॉक स्कोर में को बहुत इंप्रूव करना है, यस ये करेक्ट फिक्सेशन है, बट यू शुड नॉट बी कि अरे यार मेरे तो हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा, डिप्रेशन में जा रहे हो, एकदम कुछ आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो दैट शुड नॉट बी योर वे, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर. व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि अगर आपने कोई मॉक दिया है तो वो मॉक का जो स्कोर है, हाउ वॉज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट मॉक, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. तो अगर आपने कोई मॉक दिया, आप लगातार मॉक दे रहे हो, 80s में आ रहा है, 90s में आ रहा है, तो करना क्या है, वहां से आपको टारगेट करना है कि हाउ टू रीच 100 इफ यू आर एट 80. इफ यू आर ऑलरेडी एट 100, योर नेक्स्ट एम शुड बी हाउ टू रीच फ्रॉम 100 to 110. 110 है तो 120, 30, 40, इस तरह से टेक बेबी स्टेप्स. एंड बेबी स्टेप्स लेने से फायदा क्या होगा, व्हेन यू एनालाइज योर मॉक्स तो यू विल फाइंड आउट कि यार इतनी मिस्टेक्स थी जो मैंने इस मॉक में करी है, अगर ये मैं अगली बार नहीं करूंगा तो डेफिनेटली माई स्कोर विल इंप्रूव, एंड येस it will definitely improve. You force yourself to find mistakes in the mock that you've just given and see कि किस जगह improve हो सकते हैं, किन किन points पे आप improve कर सकते थे, and you just have to improve on them and you're good to go. Yes. Next is taking a break from preparation. Now I have seen this a lot. Yes, students बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं हम सर घूमने जा रहे हैं 10 दिन के लिए, शादी में जा रहे हैं 15 दिन के लिए, कज़न की शादी है, फ्रेंड की शादी है, 12th बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं. तो हियर आई विल जस्ट से दिस टू यू फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, क्लैट 2020 की जो प्रिपरेशन है ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. क्लैट 2020 शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. विदाउट योर क्लैट 2020 प्रिपरेशन, आप उसके साथ अगर जस्टिस नहीं करोगे तो फिर यू आर डूम्ड. फिर तो दिक्कत आएगी हमें. यस. और अगर जैसे ही हमने 10 दिन का ब्रेक लिया, 5 दिन का ब्रेक लिया और हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो हमारी जो रिदम हमने जो बनाई थी वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी. सो नेवर एवर टेक अ ब्रेक फ्रॉम प्रिपरेशन, एंड इफ यू आर टेकिंग अ ब्रेक, इफ देयर इज अ जेन्युइन रीजन, मेक श्योर जितना भी आप जहां पे भी पढ़ सकते हो डेफिनेटली पढ़ो. अगर एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स हैं आपके, इफ आप क्लैट टॉपर्स के इंटरव्यू भी अगर देखेंगे, अगर आप सुनोगे उनके इंटरव्यूज, वो भी अब सब आपको ये बताएंगे, जिन्होंने 12th के साथ एग्जाम क्रैक किया है वो सब आपको ये बोलेंगे कि उन्होंने बोर्ड्स में भी पढ़ाई करना बंद नहीं किया. दे डिड नॉट स्टॉप इवन इन देयर बोर्ड्स. वो बोर्ड्स में भी उनकी तैयारी जारी थी. ऑब्वियसली दे वर नॉट स्टडीइंग फॉर 12 hours, 14 hours, बट यस इट वाज अ कंटिन्यूअस एफर्ट. यस, 2 घंटे 4 घंटे जितना टाइम आप निकाल सकते हो आपको निकालना है फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है. डू नॉट टेक लॉन्ग ह्यूज ब्रेक्स फ्रॉम योर प्रिपरेशन. नेक्स्ट इज ओवर एम्फेसिस ऑन अदर एग्जाम्स. सो अगर आपका एम क्लियर है, अगर आपको लॉयर बनना है, अगर आपको नेशनल यूनिवर्सिटी में जाना है, इफ यू हैव डिसाइडेड ऑन दिस, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि यही करना है मुझे, तो करना क्या है फिर आपको, अगेन क्लैट को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना है और उसके लिए पूरा 100% एफर्ट देना है. यस. अगर आपने ओवर एम्फेसिस किया बाकी एग्जाम्स पे, आपने 6-7 फॉर्म्स भर रखे हैं, थोड़ी सी इसकी पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी सी इसकी पढ़ाई कर रहे हो, तो होगा क्या, अगेन आपने ये सुना है 2 नाव में सैर नहीं कर सकते एक साथ, तो वही अगर करोगे तो क्या होगा, डूब जाएंगे. सो मेक योर नंबर 1 प्रायोरिटी. चूज एनीथिंग, एनी एग्जाम जो भी आपने लिया है, अगर उसमें से क्लैट नंबर 1 प्रेफरेंस है आपका तो गिव योर ऑल. ठीक है. एम्फसाइज सबसे ज्यादा उस पर करना है. जब भी स्पेयर टाइम मिले तब आप बाकी सब्जेक्ट्स पे पढ़िए. यस. बट अगर आपका ओवर एम्फेसिस, अगर आपका टारगेट जो है कोई और एग्जाम है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देनी चाहिए.
सेकेंड जो भी है आपका, फिर धीरे धीरे सो ऑन एंड सो फोर्थ. यस, सो ओवर एम्फोसिस आपको नहीं देना है बाकी एग्जाम्स पे, फोकस करना है. इवन 12th, यू नो, डोंट ओवर एम्फोसाइज ऑन 12th कि यार 12th है, बोर्ड्स है, क्या होगा, प्री बोर्ड है मेरा. डोंट ओवर एम्फोसाइज. व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि हर साल जो भी बच्चा क्लैट दे रहा है, अगर वो ड्रॉपर नहीं है, अगर वो रिपीटर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो 12th का बोर्ड भी दे रहा है और बोर्ड के साथ वो भी एग्जाम क्रैक कर रहा है. तो जितने भी आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने क्लैट का एग्जाम दिया है, उन्होंने भी 12th के साथ ही मैनेज किया है. तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही अन्याय हो रहा है. यस, इट वाज देयर फॉर एवरीवन मैनेज्ड इट विद देयर 12th, सो यू विल हैव टू डू द सेम एज वेल. यस, नेक्स्ट इज टू मेनी बैकअप ऑप्शंस. आपको बहुत ज्यादा बैकअप ऑप्शंस रखने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरा यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ हो जाएगा, वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ हो जाएगा. इससे क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने एक क्लियर सेट नहीं रखा, अपने क्लियर एम नहीं रखा कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मेरा एम है एनएलएस बैंगलोर जाने का. अगर ये एम ही नहीं, आपका एम है कि यार मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए, अच्छा डिसेंट सा कॉलेज मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है आपका, बहुत बड़ा ब्लंडर है. क्यों है ये ब्लंडर? ये ब्लंडर इसलिए है क्योंकि नंबर 1, अगर आपने बैकअप ऑप्शंस बहुत सारे रखे तो आपका ध्यान डाइवर्टेड रहेगा. ठीक है, आप क्लियरली फोकस कहीं पे कर नहीं पाओगे. आपको लगेगा यार इतनी प्रिपरेशन कर ली है, सही नंबर ला रहा हूँ, एवरेज मार्क्स भी लाओगे तो आपको लगेगा कोई ना कोई तो कॉलेज मिल ही जाएगा मुझे. तो यू विल नेवर वर्क, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आप कभी नहीं लगाओगे यहाँ पे. जो कि आपको पता है कि अगर एनएलएस बैंगलोर हमें जाना है, अगर हमें टॉप 5 एनएलयूज में जाना है, टॉप 10, टॉप 15 में अगर हमें एनएलयूज में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जो आज तक हमने कभी नहीं करी है. और वो मेहनत जैसे ही आप करोगे, यू विल फील योर सेल्फ दैट यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस टू क्रैक द एग्जाम. यस, सो बहुत ज्यादा बैकअप ऑप्शंस नहीं रखने. कीप बैकअप ऑप्शंस, बट योर मेन गोल शुड ऑलवेज बी क्लैट 2020. अपना जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, उसको करना क्या है, आपको अपने ड्रीम कॉलेज का एक प्रिंट आउट लीजिए, अपनी स्टडी टेबल पे लगा दीजिए, अपने बेड के सामने वाली दीवार पे लगा दो, डू व्हाटएवर, मोबाइल पे वॉलपेपर लगा दीजिए. जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपके सामने होना चाहिए टू इंस्पायर यू ऑन अ डेली बेसिस, एंड दिस विल डेफिनेटली डू यू वंडर्स. Yes, so thank you so much for watching the video, and I'll meet you in the next video. Thank you so much.